The next property of the lanthanide is ionization enthalpies. The next point, the next property of the lanthanide is ionization enthalpies. Now we know what is ionization enthalpy. It is the energy required it is the energy required to remove electron from the outermost shell of an atom. What is ionization enthalpy? It is the energy required to remove electrons from the outermost shell of an atom. मतलब कोई भी atom से उसके outermost shell में से अगर हमें electron remove करना है, then the energy required to remove the electron from the outermost shell of an atom is called as ionization enthalpy. अभी यहाँ पे भी हमें इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है. We can just write down here the energy required to remove first electron from an atom is called as first ionization enthalpy. See here again, the energy required to remove first electron from an atom. मतलब कोई भी atom से अगर हमें first electron remove करना है, energy required to remove the first electron is called as first ionization enthalpy. See, what is ionization enthalpy? It is the energy required to remove the electron from the outermost shell of an atom. मतलब कोई भी एटम के आउटरमोस्ट शेल से अगर हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लगेगा, दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी. देन the energy required to remove the first electron from an atom is called as the first ionization enthalpy. मतलब अगर हमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो उसके लिए जो भी एनर्जी लगेगा उसे आप क्या बोलोगे? फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी. अगर हमें सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, then energy required to remove the second electron is called as what? Second ionization enthalpy. And energy required to remove the third electron is called as what? Third ionization enthalpy. Okay, so here we have said here the energy required to remove the first electron from an atom is called as first ionization enthalpy, correct? And here the first ionization enthalpy for lanthanoid is around 600 kilojoule per mole. मतलब अगर हमें लैंथेनाइड से फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब अगर हमें लैंथेनाइड से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, फर्स्ट कोई भी लैंथेनाइड से अगर हमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो अराउंड हाउ मच एनर्जी वी रिक्वायर? 600 किलो जूल पर मोल. Similarly,
the energy required to remove second electron from lanthanoid is the energy required to remove the second electron from lanthanide is around 1200 kilojoule per mole. तो अगर हमें second electron remove करना है, so energy required to remove second electron from lanthanoid is around 1200 kilojoule. But the energy required to remove third electron is comparatively less because it leads to stable empty half filled or completely filled configuration. See, normally what I have said here, see, the energy required to remove the first electron is around 600 kilojoule per mole. Energy required to remove the second electron from any lanthanide is around 1200 kilojoule per mole. But the energy required to remove the third electron is comparatively less because third electron remove करने के बाद हमें क्या मिलेगा? You will get stable empty f orbital, or you may get half filled f orbital, or we may get completely filled f orbital. So third electron remove करने के बाद we may get stable empty orbital, we may get stable half filled orbital, or we may get completely filled configuration as in case of lanthanum. La means lanthanum, Gd means gadolinium, and Lu means lutetium. Lu means what? Lutetium. Where मतलब जैसे कि La के केस में हमें एनर्जी कम लगेगा रिमूव करने के लिए, गैडोलोनियम में भी थर्ड एनर्जी कम लगेगा और लुटेशियम भी कम लगेगा. So La is called as lanthanum, Gd is called as gadolinium, and Lu is called as lutetium. Lu is called as the lutetium, correct? So what we have seen here, what is ionization enthalpy? It is the energy required to remove the electron from the outermost shell of an atom, are called as ionization enthalpy. Second, energy required to remove the first electron from an atom is called as first ionization enthalpy. Now here the first ionization enthalpy is for lanthanoid is around 600 kilojoule per mole. The energy required to remove the second electron from lanthanide is around 1200 kilojoule per mole. But the energy required to remove the third electron is comparatively less. Why? Because it leads to make the stable empty, stable half filled or completely filled configuration
as in case we get to see in case of what? We get to see in case of lanthanum, we get to see in the case of gadolinium, and we get to see in the case of lutetium. So this we have done with the ionization enthalpies. Okay, we'll go for the next property. Yes, the next property is chemical property. Chemical property in general, here we can just say first one, lanthanides. Lanthanoids react with nitrogen to form nitride, that is LNN. But before that, I'll just write here lanthanide or lanthanoids are represented by symbol. Lanthanoid are represented by the symbol Ln. मतलब कोई भी लैंथेनाइड अगर हमें रिप्रेजेंट करना रहेगा तो उसके लिए सिंबल क्या लिखोगे आप? Ln. See, we know that La is a lanthanum, Lu is a lutetium, but अगर हमें कोई भी लैंथेनाइड का नाम बोलना है जनरल, तो generally what you have said, lanthanides or lanthanoids are represented by the symbol Ln. आप lanthanides भी बोल सकते हो, lanthanoids भी बोल सकते हो, lanthanons भी बोल सकते हो, कोई भी नाम लिखोगे तो भी चलेगा, but lanthanoids are represented by the general formula called as what? Ln, small capital L and small n, Ln. So lanthanoids react with nitrogen to form nitride. And what formula they will have? Ln capital N. Ln means lanthanide and N means what? Nitride. Similarly, lanthanoids react with halides to form LnX3. LnX3 are called as lanthanoid halide. So lanthanide when react with nitrogen, they form lanthanide nitride, LNN. Lanthanoids when react with halide, they form LnX3. LnX3 is called as what? Lanthanoid halide. Correct? Third, when lanthanoids are heated at elevated temperature. Elevated means at high temperature. When lanthanoids are heated at a very elevated temperature with carbon, when lanthanoids are heated at a very high temperature with carbon, the carbides are obtained. The carbides are obtained. So when lanthanoids are heated at a high temperature with carbon, the carbides are obtained and they have
they have general formula LnC2. LnC2. So what three properties you have seen here? Lanthanoids with nitrogen form nitride. Lanthanide react with the halides to form LnX3, that is lanthanide halide. And when lanthanoids are heated at a very high temperature with carbon, the carbides are obtained and they have the general formula LnC2. Carbides have the general formula LnC2. Okay. So we have done the seventh chemical property. I'll go for the next heading. The one point I had missed out in the last lecture, that I'll just do it on the next page. That the question I can say here, question, basicity of hydroxide decreases from basicity of hydroxide decreases from Ln La OH thrice to Lu OH thrice, or I can say La OH thrice is strongly basic and Lu OH thrice is weakly basic. This reason is based on what? Atomic and ionic size. What is the question I've said? Basicity of hydroxide decreases. Basicity means what? Basic nature. Basicity means what? Basic nature decreases. Basic nature decreases when we go from lanthanum hydroxide to lutetium hydroxide. Here I have written La. La means what? Lanthanum hydroxide. And here I have written Lu. Lu means what? Lutetium hydroxide. So when I go from lanthanum hydroxide to lutetium hydroxide, the basic character goes on decreasing, means what? LaOH thrice is strongly basic, whereas LuOH thrice is weakly basic. Explain. Explain that LaOH thrice, but the lanthanum hydroxide is strongly basic, whereas LuOH thrice is weakly basic. So what is the answer I will write here? Normally, first thing we know that as we move across the series, the ionic radii of lanthanoids decreases. The very first point, as we move across the series, the ionic radii of lanthanoid decreases. Correct? So as we move across the series, the ionic radii of lanthanoid decreases, means La3 plus has larger size and Lu3 plus has smaller size. La means what? Lanthanum 3 plus has a larger size and Lu 3 plus has a smaller size. Correct? So then
while going, what we observe here, since the ionic size decreases from La3 plus to Lu3 plus, since the ionic size decreases from La3 plus to Lu3 plus, the basicity of hydroxide decreases. Since the ionic size decreases from La3 plus to Lu3 plus, the basicity of hydroxide decreases because basicity decreases that is ionic character decreases and covalent character increases. So what happened here? Since ionic size decreases from La32 plus to Lu3 plus, the basicity of hydroxide decreases, and more else what we observe here, or you can write fourth point here, the ionic character, because ionic size is decreasing, so ionic character decreases and covalent character goes on increasing, and therefore I can say here, therefore LaOH thrice is strongest base, while LuOH thrice is weakest base. I'll explain here. See, what is the question? The basicity of the hydroxide decreases from, matlab, LaOH thrice is strongly basic and LuOH thrice is weakly basic. Again, here the main reason is what? As we move across the series, ionic radii decreases. Correct? La3 plus has a larger size and La3 plus has a smaller size. Since the ionic radii decreases from La3 plus to Lu3 plus, the basicity of the hydroxide decreases. And second, the ionic character decreases and covalent character increases, and therefore LaOH thrice is strongest base while LuOH thrice is the weakest base. Correct? So ये हमारे जो क्वेश्चन जो बीच में रह गया था वो हो गया complete. And now we are going on the last topic of this chapter, of this part, I can say, that is applications of lanthanoids. Application of lanthanoids. The first application here is when electrons are bombarded on certain mixed lanthanoid compounds. When electrons are bombarded on certain mixed lanthanoid compound, मतलब अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को
अगर लैंथेनॉइड कंपाउंड के ऊपर अगर बम्बार्ड कर दिया, इलेक्ट्रॉन अगर लैंथेनॉइड कंपाउंड के ऊपर बम्बार्ड अगर अटैक करेंगे, दे देन और दे emit visible light, they emit visible light. मतलब इलेक्ट्रॉन अगर मिक्स्ड लैंथेनॉइड कंपाउंड के ऊपर अगर बम्बार्ड करोगे तो ये लैंथेनॉइड कंपाउंड क्या एमिट करेगा, विजिबल लाइट एमिट करेगा, विल एमिट द, ओके, therefore the surface inside surface of a television inside surface of television tube or computer monitor is coated with tiny patches of three different lanthanoid composition to give three colors that make the color image. Then I repeat again. See here, when electrons are bombarded on certain mixed lanthanide compound, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग अटैक करेंगे किसके ऊपर, mixed lanthanide compound के ऊपर, then this compound, the compound will emit the visible light. मतलब lanthanide का जो compounds है, lanthanide compound will emit the visible light. Therefore, the inside surface of the television tube, हमारा टीवी जो है, inside surface of the television tube और कंप्यूटर मॉनिटर इज, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, टेलीविजन का जो इनसाइड ट्यूब है, इनसाइड सरफेस ऑफ द टेलीविजन ट्यूब के अंदर जो इनसाइड सरफेस है, इनसाइड सरफेस ऑफ टेलीविजन ट्यूब और कंप्यूटर मॉनिटर इज कोटेड विथ टाइनी पैचेस ऑफ थ्री डिफरेंट लैंथेनॉइड कंपोजिशन. मतलब हमारा जो टेलीविजन ट्यूब का जो इनसाइड सरफेस है या कंप्यूटर मॉनिटर का जो इनसाइड सरफेस है उसके ऊपर कोटिंग देंगे. किसका कोटिंग देंगे, कोटिंग ऑफ थ्री डिफरेंट लैंथेनॉइड कंपोजिशन. तो इसीलिए हमें क्या मिलेंगे, थ्री कलर्स मिलेंगे. एंड दिस थ्री कलर्स मतलब जो इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर जब अटैक करेंगे तो हमें तीन कलर मिलेंगे. एंड दिस थ्री कलर विल मेक द कलर इमेज. दिस थ्री कलर विल मेक द कलर इमेज. आई अगेन रिपीट, हमारे टेलीविजन ट्यूब का जो इनसाइड सरफेस है या कंप्यूटर मॉनिटर का जो इनसाइड सरफेस है, इनर सरफेस है, उसके ऊपर किसका कोटिंग देंगे हम लोग, लैंथेनॉइड कंपाउंड का कोटिंग देंगे. कितने कंपाउंड को कोटिंग देंगे, तीन कंपाउंड को कोटिंग देंगे. तो हमें तीन अलग अलग कलर मिलेंगे. एंड दिस थ्री कलर विल मर्ज टुगेदर टू फॉर्म द कलर इमेज, टू फॉर्म द कलर इमेज. ओके, now we'll see which compound we can have to give different color. The next here, mixed oxide of europium and yttrium, mixed oxide of europium and yttrium. Yttrium, the formula is europium Eu, yttrium Y, and
2O3. This is the oxide formula. It is a mixed oxide. मतलब यूरोपियम भी वहां पे है, yttrium भी वहां पे है. तो it's a mixed oxide of europium and yttrium releases an intense red color, when bombarded with high energy electron. When bombarded with high energy electron, मतलब अगर हम लोग हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को अगर इस ऑक्साइड के ऊपर अगर बम्बार्ड करेंगे तो ऑक्साइड से क्या मिलेगा हमें? इंटेंस रेड कलर मिलेगा. द इंटेंस रेड कलर विल बी प्रोड्यूस. अगेन आई रिपीट, अगर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन अगर आप यूरोपियम या इट्रियम कंपाउंड के ऊपर अगर बम्बार्ड करोगे तो यूरोपियम और इट्रियम कंपाउंड से क्या मिलेगा हमें? इंटेंस रेड कलर मिलेगा. इंटेंस रेड कलर मिलेगा. करेक्ट. नेक्स्ट, the next year the opto electronic application use, opto means what? Optical, and electronic मतलब optical electronic device. Opto electronic application use lanthanoid ion as active ion in luminescent materials. See here, ऑप्टो मतलब ये हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन कहाँ पे हुआ? इनसाइड द टेलीविजन सेट. टेलीविजन सेट या कंप्यूटर मॉनिटर का जो ट्यूब है उसके इनर साइड में हम लोग क्या करेंगे? इनर साइड में लैंथेनाइट कंपाउंड का कोटिंग देंगे, और लैंथेनाइट कंपाउंड का कोटिंग देने के बाद वहां पे जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? लाइट मिलेगा. तो सेकेंड एप्लीकेशन क्या है? देखो, इन इन ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन. इन ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन मतलब ऑप्टो मीन्स ऑप्टिकल. इन ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इन ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लैंथेनॉइड आयन जो है दे आर यूज एज अ एक्टिव आयन इन लुमिनिसेंट मटेरियल. मतलब जहाँ पे हमें मिलेगा ब्राइट फ्लोरोसेंस कलर मिलेगा, फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करने के लिए. तो हमारा जो मटेरियल रहेगा उस मटेरियल में हम लोग क्या यूज करेंगे? लैंथेनॉइड आयन यूज करेंगे. और लैंथेनॉइड आयन क्या रहेंगे? एक्टिव आयन रहेंगे. एंड दे विल गिव द विच कलर? ऑफ फ्लोरोसेंट मतलब लुमिनिसेंट मटेरियल बनेगा. मतलब लैंथेनॉइड आयन are used to make the luminescent material, मतलब material which produce the what? Fluorescence, which produces a different color. Okay, then I'll just write more application about this. The most notable application is the ND-YAG laser, मतलब जो फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करेगा. दैट इज व्हाट? 1 minute. The most notable application is the to prepare what? ND-YAG laser.
means what? ND means what? ND means neodymium. Ya means yttrium. Neodymium dope. Ya dope. Neodymium dope. Yttrium. Y means what? Yttrium. Aluminium garnet. ये लेजर बनाने के लिए द मोस्ट नोटेबल एप्लीकेशन इज कौन सा लेजर आप बना सकते हो? नियोडोमियम एनडी YAG लेजर. ये लेजर लाइट बनाने के लिए मतलब ये लेजर लाइट कहाँ पे भी स्ट्राइक करेगा तो हमें क्या मिलेगा? फ्लोरोसेंस मिलेगा, लुमिनिसेंट मिलेगा. मतलब कौन सा? नियोडोमियम डोप्ड विथ मिक्स विथ व्हाट? इट्रियम. And A means what? Aluminium. And G means what? Garnet. Yttrium, aluminium garnet. ये एक एप्लीकेशन रहेगा. सेकेंड इसमें और एक रहेगा अर्बियम डोप्ड अर्बियम 1 minute डोप्ड फाइबर amplifiers are, I'll just write the next point here. Erbium dope fiber amplifier are significant device in the optical fiber communication system. See, अर्बियम डोप फाइबर मतलब अर्बियम अगर हम लोगों ने यूज कर लिया अर्बियम डोप फाइबर एम्पलीफायर बनाने के लिए. एम्पलीफायर आर सिग्निफिकेंट डिवाइस. मतलब अगर हमने अर्बियम अगर यूज कर लिया एम्पलीफायर बनाने के लिए तो अर्बियम डोप फाइबर एम्पलीफायर आर सिग्निफिकेंट डिवाइस इन द ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम. हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए जो ऑप्टिकल फाइबर है उसमें मतलब साउंड वगैरह अच्छी तरह से एम्पलीफाई करने के लिए यूज किया जाएगा. सो अर्बियम डोप फाइबर amplifiers, erbium dope fiber amplifiers are significant device in the optical fiber communication system. And the last part I can say here, lanthanoids are used in hybrid cars, superconductors, and permanent magnet. Lanthanoids are used in the hybrid cars. Are used in hybrid cars, superconductors, and permanent magnets. So these are the uses. So what are the uses here? What are the uses of the lanthanoid here? The first one, what you said here, कि normally इलेक्ट्रॉन अगर लैंथेनॉइड के ऊपर अगर बम्बार्ड करेंगे तो दे विल एमिट व्हाट? विजिबल लाइट. बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट हमने क्या किया? टेलीविजन सेट और कंप्यूटर मॉनिटर का जो अंदर का सरफेस है उसके ऊपर कोटिंग दिया. किसका कोटिंग दिया? लैंथेनॉइड कंपाउंड का. एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन बम्बार्डेड ऑन दैट कोटिंग हमें कलर मिलेंगे एंड कलर इमेज मिलेगा. सेकेंड, इसके लिए कौन सा यूज किया था? यूरोपियम इट्रियम ऑक्साइड यूज किया था
और यूरोपियम इट्रियम ऑक्साइड के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करेंगे तो हमें कौन सा कलर मिल रहा था? इंटेंस रेड कलर मिल रहा था. Second, the lanthanoids are also used in what? Optoelectronic application. Means what? They are used to prepare what? Luminescent material. Means what? The material which produces the color, different color. So what is it here? The most notable application is what? Neodymium, yttrium, aluminium garnet, neodymium, yttrium, aluminium garnet to prepare that. Then erbium is dope mixed with erbium dope fiber. मतलब erbium जिसमें use रहेगा, erbium dope fiber amplifier are significant device and they are used in what? Optical fiber communication system. And next, lanthanoids are used in a hybrid car, in superconductors and in permanent magnets. Okay, so इस तरह से हमारा एफ ब्लॉक मतलब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का lanthanoid part complete हुआ. Lanthanoid. Now in the next lecture we'll start with the actinoids. Okay, so I'll stop it over here. Remaining part we'll do it in the next lecture.